Dear all, today's topic is file management in C. So, before going to start this topic, we will discuss the question given to you in the previous lecture. So, question was given to you, which of the following header file must be necessarily be included to use the dynamic memory allocation functions. So, if I want to use the dynamic memory allocation functions, so which header file I should include? The options are stdlib, stdio, memory.h, dos.h. So I think we have discussed that stdlib is the header file which we should include to use the dynamic memory allocation functions, that is malloc, calloc, realloc, and free. So if we want to use these functions, then we should include the header file stdlib.h. Now today's topic is file management. So file management refers to the process of creating, opening and reading. We want to open, read, write or close any file. So this comes under the file management. So in file we can store any data permanently. Yeah. So if we talk about the types of the files, so there are two types of the files. Text file. Text file means in which we are writing or saving the characters, that is readable characters. So this can store the ASCII values. The ASCII value of EOF is 1A. Second type of file is binary file. Binary file means in which data is stored in the form of 0 or 1. 0 and 1. So it contains non-ASCII characters. Means text file contains the ASCII characters and binary file contains the non-ASCII characters. So example of binary files are image, audio, video files. So these are the examples of the binary files. Now, if we talk about the types of files, I think so there are two types of files, it is text file and binary files. Now, if we talk about the operations on the file, so what type of operations we can perform to work with the files pointer? So before doing any operation, we have to create one file pointer. That is, we will be writing the file and we will be writing the fp. So that's how we can create the file pointer. So what are the operations we can perform? We can perform the open. For opening the file, we will be writing the f open. Then another function is to read the file. So we are having different functions, that is fscanf, fgetc, fgets and fread. So how we can remember these functions for the file management? I think we know if we want to read anything, in C, we use the scanf. So since it is a file function, so we are writing here fscanf. Since if we want to read the character, then we use the getc. So here for file management we have written the fgetc. Now, if we want to read a string, then we use the fgets. Then, so for file management, we are putting f before the gets. So, like this, we are having the file functions to read the file. Same thing, fread is also used for the reading the file. Now, if we talk about now, if we talk about the writing a file, so for writing anything, we use the printf. For file writing in the file, we use fprintf. For writing character, we use putc. For writing file character in the file, we use the fputc. For writing string, we use puts. For writing string in the file, we use the fputs. Similarly, we use fwrite for write in the file. Same thing, if we want to close the file, then we use the fclose function. So these are the different functions for the file operations. Now, if we talk about
Now, if we talk about different modes of operation modes in the file, if we want to read only file, then we will be using R for reading the file. Then, if we want to write in the file, then we will be using the W mode. Same thing if we want to append for append mode we will use small a. Then what is the difference between append and write mode? In case of the write mode, whatever written previously it will overwrite over that. In case of the append mode, uh, whatever written previously it will write after that. So this is the basic difference between the write mode and append mode. Same thing, R plus mode is there. R plus mode means read, and then along with the read we can also write. Then W plus mode is there, so along with the write we can also read the file. Then A plus mode is there, then append plus read. Actually append means the write, so in A plus mode we will be having append plus read. So these are the 6 modes for file management. दोस्तों, इस सी लेक्चर सीरीज के लिए आपका आपके जिस हिसाब से व्यूज हो रहे हैं और आपके लाइक्स मिल रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसी हिसाब का आपका प्यार मिलता रहा तो आगे भी हम कोई दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। देन so this is all about the different modes in the file. So we can write one program in C to if we want to open the file. So initially we will start from stdio.h, then we will be writing int main, we want to start the program. So I have told you if we have to create one file pointer which will be having the address of the file. So we will writing the file in capital and then star fp. Now if we want to open the file, for example file name is harish.txt. So we will be writing the f open is the function to open the file. Then we will be writing the name of the file. Then we will be writing mode, in which mode we want to open the file. For example, if we want to open in the W mode, write mode, then we will be writing the W. If we want to open the file in the R mode, that is read mode, then we can write the R here. If we want to open the file in append mode, then we will be writing the A here at that place. Now we can check the whether there may be the condition that file may be corrupted. So we can also check that file is able to open or not. So how we can check? We can check it by using the pointer. If pointer is null, if fp is equal to null, null means it is not having any address of the file. So it means that file cannot be opened. There is some error. Then we will complete this program here. We will return 1. Otherwise, file it is able to open. So we will be printing that file opened successfully. And then after that, after some work, if we want to read or write, then we can close the file. So for closing the file, we will be using the fclose function. Then inside that we will be writing the pointer of the file. So this is the one smallest program in C to open the file. Now इसके बाद इसमें एक और प्रोग्राम देख सकते हैं कि अगर हमको फाइल में कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम उसके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। सो इनिशियली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हैश इंक्लूड stdio.h। हम इसमें int main लिखेंगे। फाइल को ओपन करना लिखना चाहते हैं हम तो हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। वी विल use the f open function. Then for example file name is here data.txt, then we will writing the name of the file. इसमें मोड राइट मोड रखेंगे यहाँ पे। फिर हम चेक कर सकते हैं कि ये फाइल ओपन हो रही है नहीं हो रही। अगर पॉइंटर में कोई एड्रेस नहीं है, ये पॉइंटर में क्या है, नल है, कोई देयर इज नो एड्रेस इन द पॉइंटर, सो वी कैन राइट fp इज इक्वल टू नल। अगर ये एड्रेस नहीं है देन वी विल डिस्प्ले दैट एरर इन ओपनिंग द फाइल। अदरवाइज हम इसमें जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं एफ प्रिंट एफ लगाएंगे, मतलब फॉर दिस द फंक्शन टू राइट ओवर द फाइल। सो
यहाँ पॉइंटर लिखेंगे। पॉइंटर के बाद जो भी लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आप मेरा नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हरीश लिख दिए नेम। देन आप एज लिखना चाहते हैं, देन यू कैन राइट माय एज, एंड आफ्टर दैट वी कैन, उसके बाद हम इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम किसी भी फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। देन इफ आई वांट टू राइट स्ट्रिंग इन द फाइल, तो उस हिसाब से उसमें क्या क्या लिख सकते हैं। सो वी विल प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, stdio.h को इंक्लूड करेंगे, वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम हियर, वी विल राइट द एफ ओपन फंक्शन, वी विल मेक वन पॉइंटर। ऐप ओपन के अंदर हम क्या करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, उसको राइट मोड में ओपन करेंगे, फाइल को चेक करेंगे फाइल ओपन हो पा रही नहीं हो पा रही। अगर पॉइंटर नल है तो फाइल ओपन, देयर इज सम एरर इन फाइल ओपनिंग। उसके बाद जो भी स्ट्रिंग हम लिखना चाहते हैं तो f_s का यूज करके हम स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो सी प्रोग्रामिंग। देन उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर देना पड़ेगा फाइल का, तो उस फाइल के अंदर ये जो स्ट्रिंग है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इस हिसाब से हम कोई भी स्ट्रिंग को फाइल के अंदर लिख सकते हैं विद द यूज ऑफ काय का यूज करके, f_s का यूज करके। अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कोई कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीड करने हैं फाइल से, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूँ। सेम प्रोग्राम है, मैंने क्या किया, stdio.h का यूज किया, मैंने int main का यूज किया प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम लिखा data.txt, ऐप ओपन फंक्शन का यूज किया और पॉइंटर बनाया। इसको रीड मोड में ओपन करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे रीड करना चाह रहा हूँ। पॉइंटर में देखा कि पॉइंटर में नल है, क्या नल है तो उसमें फाइल में कोई एरर है, इट विल नॉट ओपन। अगर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको कैरेक्टर रीड करना है, तो कैरेक्टर रीड के लिए हमारे पास फंक्शन हुआ करता था गेट सी। अब गेट सी फाइल के लिए यूज कर रहे हैं तो ये एफ गेट सी बन जाएगा। तो एफ गेट सी एफ पी सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी मीन्स कैरेक्टर विल बी रीड। अब फाइल कब तक रीड करेंगे, अनटिल देयर इज नो एंड ऑफ द फाइल। फाइल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वी विल रीड जब तक फाइल का एंड नहीं हो आ जाता। सो इन कैरेक्टर्स को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, printf लगा के %c_ch। तो इस हिसाब से एक एक कैरेक्टर को रीड करने के बाद हम डिस्प्ले कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ABC लाइक दिस। देन उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे f_close फंक्शन का यूज करके। देन so this is all about the file management in C. Now we are having one question for you, for whatever you have learned from this lecture. Question is that first and second arguments of fopen are, options are a character string containing the name of the file, and second argument is mode। इसमें फाइल का नेम होना चाहिए और दूसरा आर्गूमेंट क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कैरेक्टर स्ट्रिंग कंटेन, यहाँ यूजर का नेम होना चाहिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था हरीश, और सेकंड आर्गूमेंट मोड होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कैरेक्टर स्ट्रिंग कंटेनिंग पॉइंटर, पॉइंटर होना चाहिए, सेकंड आर्गूमेंट क्या होना चाहिए, मोड होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। सो यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। You can answer the question options AB in the format of A, B, C and D in the comment box. So you try this question. We will discuss the complete answer in the next video lecture. So thank you all. If you like this video, you can hit the like button and you can share this video with your friends. Thank you very much. Thank you all.